whatever we studied, the experiment, those experiments we are going to sum. So we can divide the entire experiment into two parts. One with respect to intensity and the other one with respect to frequency. So we saw that saturation current or photoelectric current, I am representing saturation current with Is and normal photocurrent as I, both we saw depend directly on intensity of the light. So basically saturation current or photoelectric current depends on intensity of light, and we saw that stopping potential depends on frequency of light. So from here we concluded that because अगर हम लोग करंट बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ये इंटेंसिटी बढ़ने से बढ़ रहा होगा. एंड अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होगा, है ना. नेक्स्ट हमने देखा कि I किस तरह से वेरी करता है इंटेंसिटी के साथ, और वो ग्राफ जो हमने बनाया तो I वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ, यानी करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ ये आया जो हमने पहले देखा था. और सबसे लास्ट में जो ग्राफ देखा उसमें हमने ये देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है. तो सपोज ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो हमने देखा था कि ग्राफ कुछ इस तरह का आता है. दो अलग अलग मेटल की बात करें तो वो ग्राफ जो है वो पैरेलल आता है, और ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अगर 0 से न्यू नॉट तक ले जाएंगे तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है. आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स कमिंग आउट, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा इसीलिए, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा होगा, तो इसकी वजह से हम लोग को मोर नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए टू स्टॉप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह का ग्राफ हमने देखा. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जब पोटेंशियल को चेंज करा तो हमने कुछ इस तरह का एक ग्राफ ऑब्टेन किया था, आपको याद होगा. और यहाँ पे भी वैसे ही ग्राफ के वेरिएशन को देखेंगे तो ये इस तरह का ग्राफ था जहां पे ये करंट सैचुरेशन करंट है और ये पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है. यहाँ पे करंट वर्सेस, सॉरी आई शुड राइट आई हियर, करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ था ये, है ना. करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ. तो इसमें जब हम इंटेंसिटी वेरी करते हैं तो हमने देखा कि हाइयर इंटेंसिटी के लिए हाइयर सैचुरेशन करंट मिलता है, मतलब सैचुरेशन करंट भी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है. अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ को बनाते हैं तो देखते हैं कि इंटेंसिटी वेरी करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है. लेकिन यहां पे देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट तो सेम ही रहता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी कैन सम अप द एंटायर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इन विच वी स्टडी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग इतना से सम अप कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दो और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है जो इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा था. पहला ये था, ये तो क्लियर है कि न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए देयर इज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जितनी चर्चा हुई वो सब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए है. दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है इंस्टैंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टैंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट. मतलब जिस समय लाइट फॉल करना शुरू हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है,
अगर लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ऐसा कोई भी लाइट फॉल करता है ऑन दैट फोटो सेंसिटिव प्लेट, तो इंस्टैंटेनियसली इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये नहीं कि कुछ समय लेगा, थोड़ा समय ले लिया, अच्छा चलो 2 मिनट वेट करते हैं फिर निकलेंगे, वो नहीं। इफ light of frequency greater than threshold frequency falls on the photosensitive plate, you will see that electron comes out instantaneously. So it is an instantaneous process. Even if there is a time lag, that time lag is 10 to the power minus 9 second. You can imagine this time is very small, so it cannot be detected from normal instruments. Yes, so almost instantaneous process है। अच्छा, एक और चीज जो यहां से निकल के आती है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास कम काइनेटिक एनर्जी है, तो एक चीज यहां से ये भी ऑब्जर्वेशन है कि all the electrons do not have same kinetic energy, है ना? All electrons do not have same kinetic energy, है ना? So these are the important points which are coming out from the experiment. Please note this down. This is very important to sum up the entire observation of the experiment. Then we will see how we can explain these. Okay, so based on these experiments, some laws of photoelectric emission were framed. Okay, there are a total 5 laws of photoelectric emission, which are all the points which we have discussed. Simply, they are all the points which we have discussed, which are simple observations of this experiment. है ना? इन experiments के simple observations को ही हमने laws of photoelectric emission कह दिया, ठीक? And then we will see how we will explain. But these laws you do not need to write. This is already there in the PDF notes which has been provided. So simply I will read them out and you will understand that every point in the laws of photoelectric emission we have already discussed. So let's come to the point. The first point is there is no time lag between the incidence of radiation on the metal surface and emission of photoelectrons from it. So we have already discussed this, that electron emission is instantaneous if frequency is greater than threshold frequency. So that's why the first point says there is no time lag between the incidence of radiation and emission of photoelectrons. Second thing, for the light of a given frequency greater than threshold frequency on the photosensitive surface, the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light. So you can see here, this is the graph which we are talking about. Second point simply says that if your frequency is greater than threshold frequency, then photoelectric current will depend directly on the intensity of light. This was the second point. Now coming to the third point, the maximum kinetic energy of photoelectrons. The electrons which are emitted during this process are called photoelectrons. So the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a given metal surface is independent of intensity. So this maximum kinetic energy does not depend on intensity, is independent of the intensity, but depends only on the frequency of incident radiation. It increases with increase in frequency of incident radiation. More is the frequency of light, more is the maximum kinetic energy of electron. This is the third law of photoelectric emission. Now coming to fourth law, for a given photosensitive surface. If we have a given photosensitive surface, the saturation value of photoelectric current, the saturation value of photoelectric current is directly proportional to intensity of light. This is also we have talked. Intensity of incident radiation and is independent of frequency. So it does not depend on frequency. Even if we vary frequency, saturation current does not change. But if we vary intensity, saturation current increases. If we increase intensity, saturation current increases. This is the fourth point. Now coming to the fifth point,
there is a certain minimum value of frequency of radiation incident on a given surface below which emission of photoelectrons does not take place. This also we have talked about. There is a minimum frequency below which there is no emission of electrons which takes place, and this frequency is called threshold frequency, and it is constant for a given metal. It is a constant for a given metal, and this threshold frequency is independent of the intensity of incident radiation. So this threshold frequency, the minimum frequency required for electron emission, is independent of intensity. Even if the intensity is very high, the threshold frequency remains the same. So even if your light is very dim, what do we mean by higher intensity? It simply means that your light is very bright. Yes, and you, how can you get that high intensity? You just bring the source very close to the metal surface and you will get a very high intensity light. So even if your light is very intense, but still the threshold frequency remains the same. So threshold frequency is independent of intensity of light. These are the points which are coming out from the experiment. Let's synchronized.